all the pretty women. This is Astha Joshi and you're watching Learning Never Stops, and men too. I mean, pretty men and women. This tutorial is just for you guys. So here we get started. 1, 2, 3. This song, was basically my very first request that came to me, which of course came from my very own cousin, my very own sister Garima. लेकिन मैंने तब उस रिक्वेस्ट को कहीं पार्क कर दिया था क्योंकि मुझे यूट्यूब में कहीं पे भी इस गाने का ट्यूटोरियल नहीं मिला. ओके और तो मैंने सोचा कि चलो जब मैं इस लायक हो जाऊंगी, जब मुझे खुद गाने निकालने आ जाएंगे उकुलेले पे, तब मैं इस वीडियो को करूँगी. बट देन आई जस्ट स्किप्ड एंड देन केम श्रद्धा, जिनका अमेजिंग यूट्यूब चैनल है रीबॉर्न आर्ट्स. श्रद्धा, डू कमेंट बिलो that people can check out your channel as well. It's a lovely channel. You're an amazing young girl, or I really like the way you're also playing your ukulele on your Insta page. I mean, superb. You girls, you people are amazing. You're amazing me every time when you send me your videos, and when I view you on Insta, I mean, you guys are like amazing. She then said, can you please make a tutorial on this song? And I'm like, wait a minute, I must do it now. Hence, pretty women. तो शुरू करते हैं with this tutorial. Now there are 1, 2, 3, 4, 5. Now there are 5 chords on this song. लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है. Super easy, simple chords हैं. Switching भी इतनी कोई difficult नहीं है. It's like amazing. एक शायद नई chord है जो आपको लगेगी, E major 7. लेकिन हमने ये chord पता है कल होना हो के ही कल होना हो वाले song में भी use करी है. So I'm going to first tell you E major 7, how it is played, and then we will go to the other chords. If you already know how to play these chords, skip, go ahead. Alright, yeah, use the timelines. Okay, so sabse pehle we will do E major 7. E major 7 is, do you know how to make a G? Do you remember your G? The downward facing triangle? Just remove your ring finger, and this is E major 7. Okay, so how do you play it? You use your index finger and your middle finger for this, bunny ears again, but not an F this time. This time it is like this. So what we do is we use our second fret. Oh, I'm using capo on the first fret. So second fret, we'll go on the third string with our index finger, and middle finger से जाएंगे अपनी पहली वाली string पर. E major 7. Okay, then we have C, very easy, third fret, first string. Then we also have A minor, very easy, second fret, fourth string. Then we have F, very easy, don't lose your A minor, just put your index finger on first fret, second string, F. Then we have D minor, very easy, do not lose your F now, just take your ring finger और उसको अपनी middle finger के पीछे रखो on the second fret, third string, D major. So A minor, F and D major are like totally भाई बहन का रिश्ता है तीनों के बीच में. They're like very similar. Then we have C and we have E minor 7. These are the 5 chords. Super easy. शुरू करते हैं with the strumming pattern. I have kept it very easy. Again it is down, down, up, down, up, down, down, up, down, up. इसको हम कहते हैं island strumming. Island strumming. Down, down, up, down, up, down, down, up, down, up. Okay. Now add some accenting to this. I will make a video on accenting, a proper video on accenting, because that shorts that I have made is very fast, and not only you feel it but even I feel it today when I watch it. I also feel that yes, it's a bit fast, because to fit in 1 minute का frame I really increased the speed. तो मैं एक वीडियो बनाऊंगी ऑन क्या कहते हैं एक्सेंटिंग पर, एक अच्छी सी वीडियो बनाऊंगी और वो मैं अपलोड करूंगी आप लोगों के लिए, सो दैट यू कैन रेफर टू दैट फ्रॉम नेक्स्ट टाइम. ओके, टिल दैट टाइम I will link the shorts, and once that video is made then I will link that video as well in the description. Okay, now let's start with this song. ओके, सो इस गाने को मैंने बीच से उठाया है, फ्रॉम सोने सा रंग है, और मैं वहीं से इस ट्यूटोरियल को भी शुरू करना चाहती हूँ. बट डोंट वरी, आई विल ट्राई नॉट टू मिस आउट ऑन एनीथिंग. सो या, जस्ट बेयर विद मी इफ आई स्टार्ट फ्रॉम बिटवीन. ओके, सो आई स्टार्ट फ्रॉम सी and I'm also going to use E major 7. So switch बहुत easy रहेगा. C, E major 7. Okay, I usually rest my
this part, you know, the L part of my hands on my capo, it just makes me playing these two chords very easy, and it eases my fingers. So we're gonna start with C, and we'll go like this. So ne sa on C, and then rang hai mein we'll go to A major 7. Rang hai. Then again to C. Shishe sa, and then ang hai, fir C pe aa rahe hain. Okay, so this switch is quite fast. Okay, you can play it on E major 7, but then it doesn't sound, it doesn't match, it doesn't go in sync. पता नहीं चलेगा अगर आप ऐसे भी बजाते हो तो पता किसी को नहीं चलेगा. अगर आप E major 7 पे वो वाला लाइन भी बजा रहे हो तो पता नहीं चलेगा. बट यू नो एक जो बेटर साउंड है वो ऐसे आएगी. ऑलराइट, it's not difficult. Okay, it's not difficult. I'm not giving you numbers, just listen to the tune and then do it. Okay, I do not like giving कि आधा इधर बजाओ आधा उधर बजाओ. Okay, just the switch will happen very organically. Listen to the tune, look at it. सोने सा रंग है, शीशे सा अंग है. Okay, शीशे सा अंग है. स्ट्रमिंग को रोकना नहीं है, स्ट्रमिंग करते रहो, इसको रोको. Do this exercise. I should make a video on doing ukulele exercises also. Okay. सोने सा रंग है, शीशे सा अंग है. Okay, good job. You guys are good. Alright, अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है then just pause and practice. It's okay, it will come with practice. Alright, now let's start from the top. सोने सा रंग है, शीशे सा अंग है, जो देखे, is that C? दंग है क्या, C कहूँ, and then A minor, हैरान मैं भी हूँ. Okay, one more time. लास्ट में जाके हम लोग हैरान से हम लोग फिर we go to A minor. Right, let's start from the top. सोने सा रंग है, शीशे सा अंग है, जो देखे रंग है क्या कहूँ, हैरान मैं भी हूँ. Easy, right? तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही जाएगा. Let us see how. ये क्या अंदाज है, इतना क्यों नाज है, इसमें क्या राज है क्या कहूँ वो. ओके, इसमें हम लोग A माइनर पे नहीं गए, हम लोग C पर ही रुक गए. ओके, now let's do these 3-4 lines together. सोने सा रंग है, शीशे सा अंग है, जो देखे तंग है क्या कहूँ, हैरान मैं भी हूँ. ये क्या अंदाज है, इतना क्यों नाज है, इसमें क्या राज है क्या कहूँ वो. Okay, easy peasy, lemon squeezy. Let's do the next part of the song. अब हम थोड़ा सा स्पाइस लाएंगे अपनी स्ट्रमिंग में. अब हम सॉफ्ट नहीं रखेंगे. we like bringing some जोश. Okay, वो so I'm gonna use my, वही तक मैं अपना इंडेक्स फिंगर यूज करी थी. Now I'll use my fingers. Okay, 2 or 3 of your fingers, you can use any. वो तो पल में खुश. Did you see the difference? Just the way you're strumming is like everything. Okay, so we did वो तो पल में खुशी है. Alright, and then E major 7. पल में खफा. One more time. वो तो पल में खुशी है, पल में खफा. A minor, बदले वो रंग, and then C, घड़ी घड़ी. Alright, let's play it together. वो तो पल में खुश है, पल में खफा, बदले वो रंग घड़ी घड़ी. सेम पर जब देखो रूप उसका, लगती है प्यारी बड़ी.
Okay, C, E major 7 and then A minor and then back to C. अब आता है उसे जितना देखूं, वो आएगा A minor पे. उसे जितना देखूं उतना सोचूं. So A minor and F and then D minor. All the three brothers and sisters together. उसे जितना देखूं उतना देना, क्या उसे मैं कह दूं. Then stop here. Let's create some suspense. And then back to C. Pretty woman. प्यार से मैं क्या कर रही हूँ, हल्का सा, पूरा नीचे नहीं ले रही हूँ. छक 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 छक, ट्रेन चल रही है. छुप 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 छुप. Pretty woman, pretty woman. And then we'll go like this. समझ आ रहा है ना? It's very easy. कुछ ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं बट वैसे वो ड्रामा है नहीं. ओके, राइट? ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वो तो पल में खुश है पल में खफा. वो तो पल में खुश है पल में खफा, बदले वो रंग घड़ी घड़ी, पर जब देखूं रूप उसका लगती है प्यारी लड़ी. एंड देन उसे जितना देखूं उतना सोचूं, क्या उसे मैं पे आ जाएंगे हम लोग डी माइनर पर. तो उसे कितना देखूं उतना सोचूं, क्या उसे मैं कह दूं. Pretty woman, उसको देखो ना. Pretty woman, one more time. Pretty woman, देखते हो ना. Pretty woman, तुम भी कहो ना. Pretty woman. Then comes मैंने जिसे अभी भी देखा है. अगर आपको वहाँ से गाना बजाना है तो आप कैसे बजाओगे? मैंने जिसे अभी अभी देखा है, कौन है वो अनजानी. ओके, अगेन स्विच. वो है कोई कलियां कोई किरण, या है कोई कहानी. देन स्विच टू ए माइनर. उसे जितना देखूं एफ, उतना सोचूं, क्या उसे मैं डी माइनर कह दूं. या अगेन बैक टू सी. Pretty woman, देखो ना. Pretty woman, देखते हो ना. Pretty woman, na 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 na. Khalas. With this song we are over. We are finished. Amazing song, amazing to play on ukulele. I thought that this song is gonna be so difficult, but such easy chords यार, such easy chords, right? और switching भी कितना easy है. I mean, especially the A to F, F to D minor, and C to E major 7. The switching is so smooth, so easy to do. Even beginners can play this 5-chord song. Okay, so yeah, lovely. So with that, my lovely people, we have come to an end to this tutorial, this lesson. Amazing song, isn't it? And go ahead, play this, record it if possible, send it to me on my Insta. You can, DM me there, PM me there, whatever you call it. I would love to see you all. I said it earlier also, but when I see you guys play it, I play it whatever, but when you play it, then it takes me to a different high. Alright, so yeah, thank you for that. I will see you next time. Until then, adios amigos and amigas.